Good morning friends, myself Shishir Pandey, and I will be discussing about the central theme of molecular biology, that is the central dogma. First of all, we must understand the meaning of this particular branch of biology, what we call as molecular biology. This is a very applied branch of biology in which we study about nucleic acids and DNA. In this particular session about central dogma, I will be dealing about how DNA forms RNA and how the language of RNA is coded into the language of proteins. In this particular session, the following contents I have kept into mind before explaining this particular phenomena. That is, first of all, we will study which scientist has given the term central dogma. Second, what is the definition of central dogma? Third, what are the steps involved in central dogma? Fourth, the important locations inside the cell in which the different phenomena are taking place. What is the difference between the template and the non-template strand? And lastly, what is the basic importance of central dogma? Now, coming to the first topic, who proposed the term central dogma? It was Francis Crick in the year 1956 who proposed the term central dogma. He is the same scientist who is also involved in the invention of the nucleic acid, which we basically called as the DNA. Now, जब हम सेंट्रल डॉग्मा की डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए से एमआरएनए जो बनता है उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और एमआरएनए से जो प्रोटीन्स बनता है उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं. तो बेसिकली सेंट्रल डॉग्मा इज द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए to mRNA to form a functional product which we basically called as proteins. Inside a biological system, what is the significance of proteins? तो इसको हम बहुत छोटे से एग्जाम्पल से अगर समझें तो जैसे हम देखते हैं तो हम सिर्फ इसीलिए देखते हैं क्योंकि हमारे विजन प्रोटीन्स जो फंक्शनल हैं वो हमारे को देखने में हेल्प करते हैं. कोई भी बायोलॉजिकल एक्ट अगर बॉडी में होता है तो वो सिर्फ एक कारण से होता है क्योंकि उसके फंक्शनल प्रोटीन्स हमारी बॉडी में ठीक तरीके से काम कर रहे हैं. नेक्स्ट, the steps which are basically involved in central dogma. There are three basic steps which are involved in the process of central dogma. They are replication, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. अगर हम डीएनए के डुप्लीकेशन की बात करेंगे तो जो बेसिक प्रोसेस हमारा होता है उसे हम बेसिकली रेप्लिकेशन कहते हैं, और उसे हम डेफिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे समझ सकते हैं कि इट इज नथिंग बट डीएनए डिपेंडेंट डीएनए synthesis. The basic enzymes which are involved in the replication process are the DNA polymerases and the replicative factors. The second important step in central dogma is transcription, which is DNA dependent RNA synthesis. कैसे DNA mRNA को बनाता है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और इस प्रोसेस में बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है विच इज बेसिकली ट्रांसलेशन. आगे जाके जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे सेंट्रल डॉग्मा को स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा एमआरएनए बनता है उसमें एक 3 लेटर कोड होता है जिसे हम कोडॉन्स कहते हैं, और ये कोडॉन्स बेसिकली स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं, और ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स जो लीनियर चेन बनाते हैं उन्हीं को आगे जाके हम पॉलीपेप्टाइड्स या प्रोटीन्स का नाम देते हैं. नाउ कमिंग टू द फोर्थ सेक्शन which is very much important, कि where is the location of mRNA, DNA and proteins. In a cell basically there are two major components. One we call as the nucleus and the other we call as cytoplasm. Inside the nucleus what is happening is the genetic material in the form of DNA is present. Here in the nucleus basically two processes are taking place. One we call as replication and the other is transcription. When DNA polymerase acts on DNA, then
basically duplication of DNA occurs, which we call as replication. But when on a single standard DNA template, RNA polymerases and replicative factors are acting, then mRNA is formed, and that particular process is called as transcription. That means basically inside the nucleus, the process of replication and transcription is taking place. जब यहाँ पर mRNA बन गया, जब न्यूक्लियस में mRNA बन गया, तो यही जो mRNA होता है वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और इस mRNA पे कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो अल्टीमेटली प्रोटीन्स को कोड करते हैं, और इसी को हम ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहते हैं. जब कभी भी कोई नया प्रोटीन बनता है तो वो फंक्शनल नहीं होता, क्योंकि वो अपने लीनियर फॉर्म में होता है और प्रोटीन्स की एक्टिव साइट बहुत दूर दूर होती हैं, और जब तक कि उनकी एक्टिव साइट आमने सामने नहीं आएंगी तब तक वो प्रोसेस प्रोटीन फंक्शनल नहीं हो पाएगा. इसीलिए प्रोटीन्स की बाद में सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स प्रोटीन फोल्डिंग होती है, और उसके बाद वो प्रोटीन फंक्शनल हो जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग to the molecular level discussion of central dogma. Before understanding this concept, हमें ये पता होना चाहिए कि जो DNA होता है वो बेसिकली डबल स्टैंडर्ड होता है, जिसका एक एंड 5 प्राइम से 3 प्राइम और दूसरा एंड 3 प्राइम से 5 प्राइम रन करता है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल द DNA strand as a anti-parallel strand. Whenever the process of replication or transcription has to take place, the two DNA strands unfold and they form a single strand template. Now, the two strands are basically called as the strand which is running in 5 prime to 3 prime direction is basically called as the sense strand, or the coding strand, or the non-template strand, while the strand that is running from 3 prime to 5 prime direction is basically called as the template strand, the non-coding strand, or the anti-sense strand. Whenever the process of transcription is taking place, this particular strand, which is the template strand, will be complementing with the bases which are present in the nucleus to form a mRNA. Now, when the process of complementation is taking place, we must know, as per Chargaff's rule, DNA in case of DNA, the adenine will base pair with thymine, and in case of RNA, the adenine will basically complement with uracil. Similarly, guanine will complement with cytosine. Now, when this strand is behaving as a template, we are applying the rule of complementation. That means कि T will pair with A. Similarly, A will go for thymine, but in this case we are basically forming the mRNA, and in mRNA thymine is not present, since thymine is the characteristic feature of DNA. Hence, in case of RNA, we will be getting this particular nitrogenous base, which we call as uracil. Cytosine will complement with guanine. Again, adenine will complement with uracil. Cytosine with guanine, and similarly. And hence, a mRNA chain will be formed. This is this particular mRNA on which sets of 3 nitrogenous bases are present, and these sets of nitrogenous bases are basically called as codons. These particular sets of codons will actually be translated through a very special RNA molecule which we call as the tRNA molecule, and this codons will be coding into the specific amino acids. In this chain, we are basically having 1, 2, 3, 4, and 5 codons. The first codon is a starting codon, and this is coding for a methionine amino acid, which in case of prokaryotes is formilated, and hence F-methionine is coded. The second amino acid is coding from tryptophan, the third for arginine, fourth for valine. The fifth one is basically a nonsense codon. Now, in the genetic code,
we have 64 codons, out of which 61 are functional, that is, they code for specific amino acids, whereas the 3 codons, basically UA, UAG and UGA, they never code for any specific amino acids in case of eukaryotes, hence they are called as nonsense codon. Whenever there is a formation of nonsense codon on the mRNA chain, the chain will terminate, and only those amino acids which are present before the nonsense codons will code for the amino acids in that particular polypeptide chain. The 2 amino acids are basically linked through each other by a transpeptide bond, which are basically involved in the lineage of amino acids. Now, this chain of amino acids will code for a polypeptide or proteins. पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स में जो बेसिक फर्क होता है वो बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन्स को एक ही समझते हैं, वो बायोकेमिस्ट्री उनकी सिर्फ एक है, लेकिन बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर मासेस वी आर यूजिंग 2 different words. If the molar mass of amino acid chain is less than 1000 Daltons, then we are using the term polypeptide, and if it is greater than 1000 Daltons, then we are using the term proteins. Now, this was the basic introduction about the molecular diagnostics of the term central dogma. The last concept of central dogma is why central dogma is important. In the whole discussion, we have studied how DNA was converted to mRNA and how the mRNA was converted to proteins. That means central dogma is basically explaining the flow of genetic information from DNA via mRNA to the proteins. Now, एक बहुत important चीज ये होती है कि ये as a rule ऐसा होता है, लेकिन कहीं भी म्यूटेशन चेंजेस के कारण अगर कोई भी नाइट्रोजनस बेस में चेंज आता है तो पेयरिंग जो है वो चेंज हो जाती है, जिस कारण से कोडिंग अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाते हैं और आगे जाके वो डिफरेंट प्रोटीन्स को कोड करने लगते हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में नॉन फंक्शनल होता है. इसलिए बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रोसेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर एक अमाइनो एसिड का सही तरीके से बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए इस टॉपिक को, जिसे हम सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं, इसे हम हार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं. थैंक यू.